ओके काजल। Yes, sir. हाँ ओके। My goal is to be number one in the world. If it happens, it would be great. If it doesn't, oh well. Much more difficult for my father, but I was very young and I took up the language very fast, and I was around kids that spoke English. That's, we little children, they speak all the time. Being number one is an amazing feeling, especially at the age of 18. I never thought a few years looking back that I would achieve it at such a young age, but it's just been very fun, and I'm enjoying it. There's still a long way to go to achieve the full recovery of the territories affected by Chernobyl. Affected communities in Belarus, the Russian Federation, and Ukraine continue rebuilding their self-reliance. I just want to grow as a tennis player. I want to get better. I don't look at pinnacles or results as a resolution. I don't think many of us keep our resolutions anyway, so it's probably not a good way to look at things. But yeah, I have so much experience behind my back, and I kind of know what works and what doesn't, but I still have the mentality and goals ahead of myself. I did fail the test, and I take full responsibility for it. For the past 10 years, I have been given a medicine called Mildronat by my doctor, by my family doctor. And a few days ago, after I received the ITF letter, I found out that it also has another name of meldonium, which I did not know. It's very important for you to understand that for 10 years, this medicine was not on WADA's ban list, and I had been legally taking the medicine for the past 10 years. The sport itself is so physical, and it requires us to play about 10 months out of the year. At the end of the season, it's no surprise that little injuries come up here and there. But as an athlete, we have to support our body, and we have to take care of it, and that's really the most important thing.
could have all the reasons in the world not to play the sport, but I love competing. There's nothing that gives you that type of adrenaline and being out in front of thousands of some of your biggest fans in the world and trying to play the best tennis that you can. ओके सो ये यहाँ तक तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया तो आ गया होगा कि who she was, है ना? Yes, sir. Okay, so now come to the next. Who she is, right? वो भी जिंदा ही है, sorry. Okay. So हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा मारिया शारापोवा है ना, रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट, राइट? तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं क्या है. Before you read, okay, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. Okay, जिससे वो जब 18 साल की थी यानी 18 years की थी तभी वो वहां पे पहुंच चुकी थी. तो अब in the last class we talked about Santosh Yadav, but in this class we are going to read about Maria Sharapova. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों का मतलब विजन क्या है, तो इस तरीके से. ओके, so there is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005 to the world #1 position in women's tennis. Okay, women tennis. So all this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. यानी जब मारिया शारापोवा सिर्फ 40 मतलब उन्हें आए हुए देखो 14 इयर्स में उन्होंने पहला प्रोफेशनल गेम खेला था, एंड उसके बाद सिर्फ मतलब 4 साल बाद यानी 18 इयर्स तक, ठीक है, और मतलब सिर्फ 4 साल वो मतलब प्रोफेशनल गेम खेलने से ही #1 पे पहुंच गई, वर्ल्ड #1 पे, है ना, #1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस. और ये सब बिल्कुल मतलब अचानक से नहीं हुआ, इसके लिए बहुत मेहनत लगा, उनका हार्ड वर्क लगा, राइट? तो ये देखते हैं कि कैसे हुआ, कैसे उन्होंने ये पोजीशन हासिल की. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday. Okay, when she was packed off to train in the United States, that trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. Okay, the latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. The nine-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. Okay, तो देखो जब छोटे बच्चे यानी अगर हम 9 इयर्स की बात करें तो 9 ईयर में कैसे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं ना, उनको पता भी नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना. उस एज में मारिया शारापोवा को अपनी माँ को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ा था, यूएसए में, राइट? Yes, sir. सिर्फ 9 इयर्स की थी तब, और उसके बाद लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे मतलब वीजा रेस्ट्रिक्शन की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा, लेकिन उन्हें मतलब साइबेरिया वापस आना पड़ा. लेकिन वापस आते समय उन्हें इस बात का पता चल गया था कि अगर मुझे मतलब टेनिस में आगे बढ़ना है तो इसका एक प्राइस तो देना ही पड़ेगा, मींस मुझे कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, राइट? तो आगे देखो आगे क्या है. I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he could not see me either.
ठीक है। तो मारिया शरापोवा यहाँ पे एक बात कर रही है कि वो मतलब हमेशा लोनली रहा करती, अकेले ही रहा करती थी, है ना। वो अपनी माँ को बहुत मिस किया करती थी, और उसके जो फादर है वो भी मतलब वर्किंग थे इस वजह से, और उनका भी ट्रेनिंग, टेनिस ट्रेनिंग चल रहा था, तो ये उनको भी मतलब उतना नहीं देख पाती थी, राइट। उनका उनका उन दोनों का भी उतना टाइम नहीं मतलब स्पेंड होता था। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. The other peoples would come in at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. Okay? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वो जैसे कि छोटी थी तो इस वजह से उन्हें 10 बजे ही सोने जाने के लिए कहा जाता था, 8 बजे, राइट। अब देखें फिफ्थ में, फिफ्थ पे आ जाओ। इसमें देखो क्या है, instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew that what I wanted. एक मिनट रुकना। मुझे खाओ। हाँ हेलो। Yes, sir. हाँ हाँ आगे देखो फिफ्थ पैर में देखो, instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than had that to steadfastly pursue my dream. तो मतलब जो चीज इन्हें डिप्रेस कर सकता था वो उन्हें और क्या बनाया, मेंटली टफ बनाया, है ना, और मतलब हार्ड, है ना, अपनी डिसीजन पे खड़े रहने के लिए।
अब जैसे कि ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें पाने की ना मतलब एक हंगर होता है, एक इच्छा होता है कि हम उसे पाके ही रहेंगे, तो वो इनके पास था, right? So that toughness Yes, sir. runs through Maria even today. It was the key her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise in the world number one spot the following. है ना? And while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of Chinese fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when she asked about her ambition make it very clear that she considered the sacrifice were worth it. I'm very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. तो अगर हम बात करें तो उनका सक्सेस होने का मंत्र क्या था? कंपटीशन, है ना? कितना अपने आप को इतना कॉम्पिटिटिव बनाओ कि हर एक चीज में तुम्हें मेहनत करने से डर ना लगे, तुम मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो, राइट? Yes, sir. हाँ, यहाँ तक क्लियर ना? Yes, sir. आगे देखो. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parrots her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. है ना? तो अब यहाँ पे उनका क्या आ रहा है? यहाँ पे उनका नेशनलिज्म भी हमें दिखाई दे रहा है ना? देश प्रेम. वो कह रही है कि अगर मैं मतलब हाँ यूएस से भले ही मैंने खेला है या यूएस में भले ही मेरा मतलब एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन जो रशिया है वो क्या है? वो मेरा देश है, रशियन मेरा ब्लड है. तो अगर मतलब रशिया चाहता है कि मैं उनके तरफ से ओलंपिक्स खेलूं तो वो खेलेंगी, राइट? Yes, यहाँ sir. तक क्लियर? Yes, sir. हाँ, आगे देखो. हाँ, like any number of teenage sensations, Maria Sharapova likes fashion, singing and dancing as a hobby. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. तो इस पैरा में क्या हो रहा है? इस पैरा में मारिया शरापोवा अपनी हॉबीज बता रही हैं कि उनकी क्या क्या हॉबीज है, लाइक फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, है ना? और उन्हें नोवेल पढ़ना भी पसंद है. और ज्यादातर किसकी नोवेल पसंद है? सर आर्थर कॉनन डॉयल की, जो क्या लिखते हैं? जो डिटेक्टिव नोवेल्स लिखते हैं, राइट? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आगे देखो. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorize. Her talent, unwearying desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and sport. But the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. है ना? तो इसमें आप बात करते हैं कि मारिया शरापोवा कि हाँ पैसा भी तो है जो उन्हें मतलब उन्हें क्या करता है? उन्हें मोटिवेट करता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? To become number one in the world, and that's the dream that kept me going. और यही उनका क्या है? एक तरह से हम उनका कह सकते हैं कि सक्सेस मंत्र है, being competitive. तो क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ओके. तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला पार्ट भी खत्म, यानी तुम्हारा ये चैप्टर हो गया यहाँ पे डन, राइट? Yes, sir. हाँ, तो इसके क्वेश्चन से सॉल्व करना है. ओके. फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे, राइट? Yes, sir. ओके, चलो बाय. Bye, sir. बाय.